हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टोनी में। आज हम हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया देखेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस का भी देखेंगे। और अगर आपने करंट अफेयर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, फाइनेंस करंट अफेयर्स, तो ज़रूर देखिएगा। और फाइनेंशियल मार्केट्स का भी वीडियो है चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉडली इसको दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंड इसके बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसका भी एक अलग फेज़ है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज़ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1770 में बनी थी कलकत्ता में, एंड 1882 में लिक्विडेट हो गई, ये फेल हो गई थी। एंड देन जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी आया था 1786 में, एंड 1791 में वो भी क्लोज हो गया। हाउस कमर्शियल बैंक 1958 तक चला था। Imperial Bank of India was the merger of three presidential banks which were formed during the British era. Merger happened in 1921 और ये three presidential banks थे: Bank of Bengal, Bombay, Madras. Imperial Bank of India was later nationalized in 1955 and renamed as State Bank of India. Okay. State Bank of India was given charge of 7 subsidiary banks in 1959. और ये सब्सिडरी बैंक्स थे: स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। जो इंडिपेंडेंस से पहले बने थे बैंक्स और जो अभी भी चल रहे हैं, वो 6 बैंक हैं। इलाहाबाद बैंक 1865 में बना था, पीएनबी इन 1894, बैंक ऑफ इंडिया in 1906, Canara Bank in 1906, Bank of Baroda in 1908, Central Bank of India in 1911. एंड बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उस समय जो बैंक्स बने थे वो हैं बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, दोनों 1906 में बने थे। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन 1911। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज पे आ गए हैं। पता है, आरबीआई एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ, एंड उसको नेशनलाइज किया गया। इस आरबीआई को, इट वाज प्राइवेट बिफोर, नेशनलाइज किया गया इन 1949 टू रेगुलेट, कंट्रोल एंड इंस्पेक्ट ऑल बैंक्स इन इंडिया। नेशनलाइजेशन इन 1969। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued banking companies acquisition and transfer of undertakings ordinance in 1969 and nationalized 14 largest commercial banks in India at the time. 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में। इलाहाबाद बैंक, जो अभी इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक विच इज़ नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, सिंडिकेट बैंक विच इज़ नाउ कैनरा बैंक, यूको बैंक, Union Bank of India, United Bank of India, which is now PNB. The second wave of nationalization followed in 1980 with 6 more commercial banks getting nationalized, which are Andhra Bank, which is now Union Bank of India, Corporation Bank, which is now Union Bank of India as well, New Bank of India, part of Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, also Punjab National Bank, Punjab and Sindh Bank, Vijay Bank, which is under Bank of Baroda. Liberalization in 1991. In 1991, Government of India adopted economic liberalization that brought about a massive change in its economic policies to enhance participation of private and international investments. RBI approved 10 private banks in India. RBI ने 10 private banks को अप्रूव किया in 1991. Global Trust Bank, which is now Oriental Bank of Commerce, ICICI, HDFC, ये दोनों अभी डी सिड्स हैं, यूटीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, टाइम्स बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। और इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को भी अप्रूवल मिला 2001 में, येस बैंक इन 2004, आईडीएफसी इन 2015, बंधन बैंक इन 2015 एज वेल। और इसके साथ काफ़ी मर्जर्स भी हुए थे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 2017 में एसबीआई का मर्जर हुआ था
which made it the largest public sector bank in India. And SBI में SBI of Patiala, Hyderabad, Bikaner and Jaipur, Travancore and Mysore ये सारे merge हो गए, which are now part of State Bank of India. Bank of Baroda, which is the third largest public sector bank after the merger. देना बैंक और विजय बैंक merge हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में. Punjab National Bank is the second largest public sector bank in India now after the merger of Oriental Bank of Commerce and United Bank of India into Punjab National Bank. Union Bank of India in 2019. Andhra Bank and Corporation Bank got merged into Union Bank of India. Indian Bank is now the seventh largest public sector bank in 2019 after acquisition of Allahabad Bank. Canara Bank is the fourth largest public sector bank in 2020 after acquisition of Syndicate Bank. अब हमारा बैंकिंग का ख़त्म हो गया, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन. अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया की तरफ. ये पहले टाइमलाइन देख लेते हैं. इन 1818 was when the first इंश्योरेंस कंपनी was set up in कलकत्ता, जो उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी, और इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. और ये डिस्क्रिमिनेट करता था बहुत, एंड प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे इंडियंस के कंपेयर टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडियन लाइफ्स वर कंसिडर्ड मोर रिस्की. 1823 में बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी बनाया गया. 1870 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटीज़ बनाया गया, एंड प्रीमियम इनइक्वालिटीज़ निकाल दिए गए ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में, जो 1818 की ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बनाया गया था. 1912 में फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेचर ब्रिंग्स इंश्योरेंस अंडर द परव्यू, enacting Indian Life Assurance Companies Act. 1938 में Insurance Act was enacted, consolidating all insurance laws into one. 1938 में. 1956 में post independence, looking at the growing malpractices by insurance companies, the government of India enacts the Life Insurance Corporation Act 1956. In 1993, Malhotra Committee was formed to learn more about the life and general insurance working in India. Among other things, it recommended a regulatory body to be formed, and ये बनी है 1999 में. As per Malhotra Committee's recommendations, Insurance Regulatory and Development Authority was set up in India. Life insurance business in India was introduced in 1818 with the establishment of Oriental Life Insurance Company in Calcutta. However, the company failed in 1834. Madras Equitable had begun transacting life insurance business in the Madras Presidency in 1829. Madras Equitable in 1829. Oriental Life Insurance Company was the first insurance company in India in 1818. First life insurance company, not general. The enactment of British Insurance Act took place in 1870. Three insurance companies were set up: Bombay Mutual, Oriental Life Insurance Company, Empire of India Life Insurance Company. The Indian Life Assurance Companies Act of 1912 was the first statutory entity to regulate the life insurance business in the country. Government of India began publishing the returns of insurance companies in India in 1914. Act कब बना? 1912 में. और रिटर्न्स कब पब्लिश करने लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? in 1914. Indian Insurance Companies Act was enacted in 1928 in order to enable the government to collect statistical data about both life and non-life businesses carried out in India by the Indians as well as foreign insurers, including the provident insurance societies. In 1938, the earlier legislation was consolidated and amended by the Insurance Act of 1938 with a view to protect the interest of the insurance public. The Insurance Amendment Act of 1950 abolished principal agencies. Which act abolished principal agencies? Insurance Amendment Act of 1950. Moreover, there were a large number of insurance companies and the level of competition was high as well. Amid allegations of unfair trade practices, the government of India therefore decided to nationalize the insurance business. अब आता है nationalization of insurance business. On 19 January 1956, nationalizing the life insurance sector and Life Insurance Corporation came into being. Subsequently, LIC absorbed 154 Indian, 16 non-Indian insurers and also 75 provident societies. Total 245 insurers को absorb कर लिया LIC ने. इनमें से 154 were Indian, 16 were non-Indian and 75 were provident societies.
LIC had a monopoly till late 1990s. During LPG reforms, इंश्योरेंस सेक्टर को भी ओपन किया गया फॉर प्राइवेट सेक्टर. जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया, हम अभी तक लाइफ इंश्योरेंस देख रहे थे, अब जनरल इंश्योरेंस का भी देख लेते हैं. फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज ट्राइटन इंश्योरेंस in 1850, also in Calcutta, also by the British. First general insurance company in India is Triton Insurance, which was set up in 1850 by the British in Calcutta. In 1907, the Indian Mercantile Insurance Limited was established. It was the first company to transact all the classes of general insurance business. First company to transact all the classes of general insurance business. In 1957, after independence, General Insurance Council was formed. It is a wing of Insurance Association of India. The council framed a code of conduct for ensuring fair and sound business practices. The Amendment of Insurance Act took place in 1968 to regulate investments and set minimum solvency margins. Nationalization of General Insurance. ये भी nationalize किया गया in 1973 by passing the General Insurance Business Nationalization Act in 1972. 107 107 इंश्योरेंस को अमेलगमेट किया गया और ग्रुप किया गया into 4 companies as नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको NICL बोलते हैं, NIACL नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC, जिसके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं. General Insurance Corporation of India was incorporated as a company in 1971. मल्होत्रा कमेटी, जिसने रेकमेंड किया था कि एक रेगुलेटरी बॉडी सेटअप होनी चाहिए फॉर इंश्योरेंस, इसके बारे में देखते हैं. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993 अंडर RN Malhotra, former governor of the RBI, to propose recommendations to reform the insurance sector in India. Okay. The objective of the committee was to complement the reforms initiated in the financial sector. The committee subsequently submitted its report in 1994, in which it recommended that the private sector be permitted to enter the insurance industry. The report also stated that the private sector be permitted to enter the insurance industry. It said that foreign companies should be allowed to enter by floating Indian companies, preferably a joint venture with the Indian partners. Establishment of IRDAI. As per the recommendations of Malhotra Committee report, 1999 में IRDA Act बनाया गया. It is an autonomous body responsible for regulation and development of insurance industry in India. In April 2000, IRDA was incorporated as a statutory body. In December 2000, the subsidiaries of General Insurance Corporation of India were restructured as independent companies. At the same time, the GIC was converted into a national reinsurer. Presently, there are 34 general insurance companies, including ECGC and Agricultural Insurance Corporation of India, and 24 life insurance companies operating in India. बस इतना ही था. हमने देख लिया है एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स हमने करंट किया एक और वीडियो में, आपको लिंक मिल जाएगा. प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें फाइनेंस करंट अफेयर्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक्स कवर किया है 10 मिनट के अंदर, वो भी देख लीजिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.